स्टूडेंट्स आमे आज क्वेश्चन आंसर किसी डिस्कशन करबा जोड़ा आमे ऑलरेडी पढ़ी सारिचे से वीडियो गुडा भलो कर देखिबो देखला पर क्वेश्चन आंसर गुडा आमे डिस्कशन जहा करचे ताकू भलो कर मन रखिबो जोटा कि तमरे बे कमिंग एग्जाम रे सब क्वेश्चन गुडा आसीबो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा मल्टी चॉइस क्वेश्चन अछि आमे ऑलरेडी पढ़ीचे सेल थ्योरी रो सब जदि आमे भलो कर ताकू देखिबा ता भितरे साइंटिस्ट नाम गुडा सब पढ़ीचे सेथरे थिला गोटे ओमनी सेलुला से कथा फर्स्ट क्वेश्चन पचरा है हु हैज एक्सप्रेस्ड ओरिजिन ऑफ सेल इन फॉर्म ऑफ फेमस एफोरिज्म ओमनी सेलुला ई सेलुला एटा ऑलरेडी हमें पढ़ीचे ओमनी मीन्स ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स एवरी सेल अरेंजेस फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल गोटे सेल जिते बेले आछि तार गोटे पुराना सेल रु ही सेटा डिवाइड हे के आछि सेटा साइंटिस्ट ले हमर रुडोल्फ विर्को सो चॉइस ए हला तार आंसर रुडोल्फ विर्को रुडोल्फ लिखाइनी खाली विर्को लिखाई छी एटा हला आंसर तार। सेकंड क्वेश्चन इनसिपिएंट न्यूक्लियस इज सीन इन द सेल ऑफ चॉइस अछि इनसिपिएंट न्यूक्लियस कथा ऑलरेडी आगुरा में डिस्कशन करचे व्हाट इज इनसिपिएंट न्यूक्लियस हला न्यूक्लियस विदाउट हैविंग एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस रो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न थाए न्यूक्लियोलस न थाए ए टाइप रो न्यूक्लियस कोडी थाए ना पर्टिकुलरली प्रोकैरियोटिक सेल उडागर थाए एवं प्रोकैरियोटिक सेल रो बेस्ट एग्जांपल हला हमरो बैक्टीरिया। सो चारटा चॉइस अछि बैक्टीरिया वायरस म्यूकर क्लोरेला ताले आंसर हबो बैक्टीरिया। सो इनसिपिएंट न्यूक्लियस इज फाउंड इन डैश ताले हला बैक्टीरिया। सो व्हाट इज इनसिपिएंट न्यूक्लियस जदि पचरा हबो ताले कोन लिखबा एटा को न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and nucleolus is known as incipient nucleus. So particularly this is found in case of bacteria. Third question nucleate देखो पिला मैंने सेकंड क्वेश्चन ने पचारला incipient nucleus थर्ड क्वेश्चन ने पचरा हला nucleate सेम जिंस incipient nucleus जहा nucleate से nucleate भी सेम जिंस. So again nucleate means nucleus without having nuclear membrane and nucleolus जो nucleus रे nuclear membrane नथिबो nucleolus नथिबो ताकू ही nucleate कहे जाय ताल सेटा कोठी अछि पुणी हमें देखो देछि nucleate is present in plant cell animal cell green algal cell bacterial cell again हमें nucleate जदि देखिबा bacterial cell नहीं रहबो because bacterial cell ता हला तमरो prokaryotic cell जो थरे कि nuclear membrane nucleolus न थाए. So question number 3 nucleate is present in bacterial cell. तापर जिबा question number 4 question number 4 देछि cell wall is present in आमे देखो तुमको सब बेले मु कहिछि जते बेले चारटा चॉइस थिबो सब बेले चॉइस उडा को मूलरू 4 नंबर चॉइस से पढी पढी का जीवो काहे कि ना फर्स्ट चॉइस तुमको ठीक लागिबो तो राइट मार देबो पछ चॉइस उडा पढी नथिबो तो संगे संगे तुमर से क्वेश्चन आंसर भूले जीवो. एठी देखो फर्स्ट चॉइस रे देछि प्लांट सेल समस्त आमे जानिछे सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक feature of plant cell that is the outer covering of plant cell. So आमे क्वेश्चन पढु पढु जदि प्लांट सेल सीधा आंसर दे दबा ताले आमे सेकंड ऑप्शन उडा जदि न पढिबा ताले भूल हे जिवो. देखो सेकंड क्वेश्चन ने देजी प्रोकैरियोटिक सेल also prokaryotic cell like bacterial cell possess cell wall due to presence of cell wall bacteria is included under plants already आगु मु तुमको पढैछि. So prokaryotic cell ले मध्ये cell wall अछि. Again third choice रे देछि algal cell ले मध्ये cell wall अछि that is one plant cell. So all of the above जो देछि चॉइस चारटा को हबो प्लांट सेल रे अछि प्रोकैरियोटिक सेल रे अछि algal सेल रे अछि सब बुथरे अछि. तेनु आमे जते बेले क्वेश्चन आंसर करबा केयरफुली देखिबा चारटा को चॉइस देखिबा को पड़िबा हमको. सो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द अबव फर्स्ट थिला प्लांट सेल सेकंड थिला प्रोकैरियोटिक सेल थर्ड थिला algal सेल तेनु आंसर हबो ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 5 ए प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स डैश प्रोकैरियोटिक सेल माने आमे ऑलरेडी डिस्कशन करछे. So what is prokaryotic cell? Prokaryotic cell माने pro means primitive. Karyotic means it is related to karyon or nucleus. Primitive nucleus means nucleus is less advanced. Less advanced means there is nucleus lacks nuclear membrane and nucleolus. Nucleus रा nuclear membrane नथिबो किबा nucleolus नथिबो. सेहिटा को ही कहंती prokaryotic nucleus. तेनु से कहूची ए prokaryotic cell lacks cell wall तो रहिबो तेणु सेकेंड देछि सेल मेम्ब्रेन भी रही पारिबो आ साइटोप्लाज्म तो निश्चित रहइबो किंतु न्यूक्लियोलस
लैक माने ता देहर न थाए कोटा ता माने न्यूक्लियोलस न थाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न थाए न्यूक्लियोलस भी न थाए तेणु आंसर हबो ए प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स न्यूक्लियोलस क्लियर हला पिला माने क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा तो क्वेश्चन नंबर 6 रॉबर्ट ब्राउन इज वेल नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन कौन डिस्कवर करथिले न्यूक्लियस डिस्कवर करथिले आंसर हला सी क्वेश्चन नंबर 7 साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल तुमको ऑलरेडी जते बेले सेल वॉल पढ़ाई थी तो मैंने पिला मैंने देखि थिबो एटा सपोज गोटे प्लांट सेल तार आउटर कवरिंग सेल वॉल सपोज दिस इज वन एडजेसेंट प्लांट सेल सो दीटा एडजेसेंट सेल भितर कौन हुए जते बेले साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हुए यार जो साइटोप्लाज्म थाए बा यार प्रोटोप्लाज्म सहित कनेक्टेड हुए बा एठू प्रोटोप्लाज्म या भितर जाई परिबो एठू प्रोटोप्लाज्म आ भितर जाई परिबो सो एटा कहंदी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल so this cytoplasmic connection is nothing but it is known as plasmodesmata and this plasmodesmata term was coined by scientist तुमको ऑलरेडी कहिछि स्ट्रासबर्गर ए जो प्लाज्मोडेस्माटा वर्ड टाको कॉइन करथिले सो व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा इज द cytoplasmic connection between two adjacent cells so plasmodesmata is the cytoplasmic connection between two adjacent cell adjacent माने पाखा पाखी between two adjacent cell so question ने देखो अच्छी cytoplasmic connection between two adjacent cell आंसर हैला plasmodesmata स्पेलिंग ठीक रे देखिबो plasmodesmata क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा हु अप्लाइड सेल थ्योरी टू प्लांट्स तुमको ऑलरेडी कहिछि सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट one is M.J. Sleden SCHLEIDEN M.J. Sleden and second one is T. Swan दी जण साइंटिस्ट सेल थ्योरी प्रपोज करथिले सो प्रथम साइंटिस्ट हेले बोटानिस्ट बा ये प्लांट को अप्लाई करिवे सेल थ्योरी सेकेंड साइंटिस्ट हेले जूलॉजिस्ट टी स्वान हेले जूलॉजिस्ट सो वर्तमान आमे आंसर पाई गले क्वेश्चन नंबर 8 रो हु अप्लाइड सेल थ्योरी टू प्लांट्स जदि कहैछि ताल प्रथम साइंटिस्ट बोटानिस्ट सो एमजे स्लीडेन होचंदी साइंटिस्ट जे कि सेल थ्योरी अप्लाई करथिले प्लांट्स मानो पे सो चॉइस बी क्वेश्चन नंबर 9 की जिबा द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय प्रथमे माइक्रोस्कोप के डिस्कवर करथिले ये दि जण हेले बापा पुओ फादर एंड सन एच जॉनसन एंड जेड जॉनसन हांस जॉनसन एंड जैकारियस जॉनसन तांकर जदि फुल ना कहबा सो फर्स्ट चॉइस अछि द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय एच जॉनसन एंड जेड जॉनसन हो तार आंसर सो पिला माने ई सब क्वेश्चन उडा को टिके भल्ले रे सीरियसली देखुथिबो तुमको एटा फोटो स्क्रीनशॉट नै कि भी निजे तमे निजे नोट कर दे परिबो सेटा को आ तमर जो मैट हबो से एई थ्रू ही क्वेश्चन उडा ऑब्जेक्टिव आसीबो किछि शॉर्ट नोट भी पडिबो डिफरेंस किछि पकेबा एवं गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पकेबा सो से हिसाब रे तमे प्रिपेयर करिवो सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो हु प्रूव्ड दैट प्लांट सेल आर टोटिपोटेंट ऑलरेडी टोटिपोटेंसी कथा क्लास रे कहिथिली व्हाट इज टोटिपोटेंसी तमे जानि छ टोटिपोटेंसी तमर शॉर्ट नोट मध्ये पढि परिबो सो जदि पढ़े राइट शॉर्ट नोट ऑन टोटिपोटेंसी ताहले कोन लिखिबा सो टोटिपोटेंसी रो शॉर्ट नोट रे तमे सिंपली लिखिबो ए प्लांट सेल कैन गिव राइज टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल टू प्रोड्यूस ए कंप्लीट प्लांट दैट टेंडेंसी ऑफ ए सेल टू फॉर्म ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल टू फॉर्म ए कंप्लीट organism is known as totipotency so totipotency is the capacity of a single cell to give rise all other cells of an organism to form a complete individual so एटा हला तार डेफिनेशन ता सहित टोटिपोटेंसी शॉर्ट नोट पड़ी थिबो ताले एटा डेफिनेशन ता लिखिबो तापर लिखिबो generally plant cells are totipotent whereas animal cells are animal cells
are not totipotent. And due to this totipotency nature, the tissue culture is possible in case of plant cell. So totipotency lagi tissue culture is possible. Tissue culture is possible in plants due to totipotency. Due to totipotency. So totipotency discover किए कले सेटा मध्ये लिखा पड़ो. Totipotency was discovered by scientist. It was discovered by scientist Haberland. LANDT last को T रहिबो. Totipotency was discovered by scientist Haberland. So short note जदि पड़िबो तमर short note गोटे पड़िबो कहिछि मु मैट रे जदि पड़िला ताले तमे लिखि परिबो totipotency definition लिखिलो. General plant cells are totipotent लिखिलो. Tissue culture is possible in plants due to totipotency and totipotency was discovered by Haberland. एतिक ही तुमको लिखा पड़िबो. So जो question number 10 थिला who proved that plant cells are totipotent. ताले आंसर ऑलरेडी हमरो पाई गलेनी Haberland. Choice A Haberland. तापर हम जिबा question number 11. Regeneration of a plant cell to give rise to a new plant is called. एबे ऑलरेडी हमें कहथिले जे गोटे सेल रु अन्य अदर सेल गुडा को मध्ये हमें डिराइव कर परिबा सेटा को कोन कहंती ताको कहंती totipotency. So answer is C totipotency. So regeneration of a plant cell to give rise a new plant is known as totipotency. So question number 12 को जिबा 12 number question. Biological organization starts with cellular level, organism level, atomic level, सबमाइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल ए सब अच्छी चॉइस रे आमे जानि छे तुमको ऑलरेडी मु कहिछि जे हमर गोटे सेल टा हला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल दैट फॉर्म्स टिश्यू सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म टिश्यू सिस्टम नंबर ऑफ टिश्यू सिस्टम दैट फॉर्म ऑर्गन एंड नंबर ऑफ ऑर्गन दैट फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म सो द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल दैट मींस एटा हबो आंसर तमरो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ cellular level cell ru hi आरंभ हुए ताले चॉइस ए हला तार आंसर सो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ऑलरेडी हम डिस्कशन कर सलेनी एमजे स्लीडेन हु इज वन बोटनिस्ट एंड टी स्वान हु इज वन जूलॉजिस्ट सबले स्पेलिंग ऊपर गुरुत्व दबा एटा एमजे स्लीडेन एंड टी स्वान SCHWANN सेटा भलो कि स्पेलिंग देखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 द टर्म साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म वाज गिवन बाय हमरो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म दीटा को मिसिले होची तमरो प्रोटोप्लाज्म सो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म ए सब टर्म देथिले साइंटिस्ट परकिंजे चॉइस ए हला आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 टर्म सेल वाज यूज्ड बाय तुम जानि छ जे सेल वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 दैट वाज ए डेड सेल कार्क सेल रु डिस्कवर करथिले कोठरी भलिया देखिले से कोठरी उडा का नाम से सेल बोल देथिले सो सेल टर्म प्रथम यूज करथिले रॉबर्ट हुक आ केबे डिस्कवर होइथिला सेल पढि परिबो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन प्लांट सेल प्रथमटा अछि बिगर वैक्यूल विथ रिजिड सेल वॉल सेकंड अछि सेंट्रियोल टेक पार्ट इन सेल डिवीजन थर्ड अच्छी सेंट्रोजोम आर इनएक्टिव इन नॉन डिवाइडिंग सेल डी चॉइस रही एब्सेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन तो मैंने देख ऑलरेडी प्लांट सेल कैरेक्टर रे मु कहिछि जे गोटे सेंट्रली प्लेस्ड लार्ज वैक्यूल रहइबो प्लांट सेल रे सेटा होछि तार कैरेक्टरिस्टिक फीचर एवं गोटे आउटर थिक रिजिड सेल वॉल रहइबो तेनु चॉइस ए हला तार आंसर बिगर वैक्यूल एंड रिजिड सेल वॉल Question number 17. Which structure is present in both prokaryotic and eukaryotic plant cell? Already आमे जानि छे prokaryotic cell भी अछि eukaryotic cell अछि आ भितरु देखो जे which structure cell wall रहि छै chloroplast prokaryotic cell eukaryotic cell थाई पारे न थाई पारे न्यूक्लियस थाई पारे न थाई पारे माइटोकॉन्ड्रिया थाई पारे न थाई पारे cell wall दुईटा आगे रहि छै prokaryotic cell भी रहि छै eukaryotic cell भी रहि छै then आमे जिबा question number 18 plant cells normally lack dash
तुमको ऑलरेडी कही गोटे ऑर्गेनेल अच्छी जोटा कि सेंट्रोजोम बा सेंट्रिओल्स सेटा प्लांट सेल ही न था आउ सब ऑर्गेनेल गुड़ा अच्छे आम प्लांट सेल ऑलरेडी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखुले तार डायग्राम देखुले से राइबोसोम अच्छी गल्गी बॉडीज अच्छी सेल मेम्ब्रेन अच्छी किंतु सेंट्रिओल बा सेंट्रोजोम प्लांट सेल ले न थाए सो चॉइस सी हम तार आंसर प्लांट सेल्स नॉर्मली लैक सेंट्रिओल्स क्वेश्चन नंबर 19 देख ए प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल प्रोटोप्लास्ट तुमको कही जे प्रोटोप्लास्ट टर्मटा क्या कहब पर्टिकुलरली प्लांट सेल ले प्रोटोप्लास्ट टर्म एप्लिकेबल करवा सो प्लांट सेल रु जदि सेल वाल टाक रिमूव करदबा आ जहाँ रहिबो सेटा हबो प्रोटोप्लास्ट दैट मीन्स प्लांट सेल माइनस सेल वाल जहाँ रहिला सेटा हला तमरो प्रोटोप्लास्ट ता माने चिंता कर प्लांट सेल रु सेल वाल टा गले ता तल रहिछि कोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहिछि तापरे प्रोटोप्लाज्म रहिछि सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म मिसी गले एटा हेगला तमरो प्रोटोप्लास्ट ता माने कोन हबो आंसर ए प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल विदाउट सेल वाल सो एटा हला तार आंसर सो व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट जदि तुमको पड़िबो तुम लिख पारो प्लांट सेल माइनस सेल वाल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट एठी हबो आंसर ए प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल विदाउट सेल वाल वर्तमान किसी फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन हम देखिबा ऑलरेडी हमें जानिचे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ स्टडी ऑफ सेल जदि हमें कहबा इट इज साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी सो आंसर है साइटोलॉजी क्वेश्चन 1 रो अच्छा बेले बेले पचरा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी टा गोटे नैरो सेंस रे हमें कहबा स्टडी ऑफ सेल खाली सिंपली कहले साइटोलॉजी होची बट सेल बायोलॉजी टा गोटे ब्रॉड सेंस आसीबो सेल बायोलॉजी माने the detailed structure function of the cell including the molecular structure of the cell like DNA RNA सब जदि डिटेल आमे सेल विषय रे अध्ययन करबा तार मोलिकुलर स्ट्रक्चर भी पढिबा DNA RNA सब कथा जे जानिबा ताले दैट इज सेल बायोलॉजी सो बेले बेले के पचारि परंती व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी जनरल स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी whereas cell biology is the detailed structure function and molecular structure of the cell then question number 2 cells are structural and functional unit of dash हम जानि छे एटा लाइफ cells are structural and functional unit of life centrosome is present in dash cell एटा ऑलरेडी हम डिस्कशन कर सालेनी centrosome is present in animal cell then Purkinje give the term protoplasm हमें आ पूर्व डिस्कशन करथिले Purkinje जने साइंटिस्ट जे कि protoplasm term देथिले protoplasm has been defined as physical basis of life साइंटिस्ट के कहते प्रोटोप्लाज्म फॉर्म्स द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट टी.एच. हक्सली ऑलरेडी हम एटा भी डिस्कशन कर सारिचे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 द बैक्टीरिया दैट हैज द स्मॉलेस्ट सेल सो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया गोटे क्वेश्चन पड़ी पारे आ गोटे क्वेश्चन भी पड़ी पारे लार्जेस्ट बैक्टीरिया सो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज डायलिस्टर न्यूमोसाइंटेस डायलिस्टर pneumoscientes this is the dialister is the genus this is the species pneumoscientes this is the smallest known bacteria so तमो पचरा हो जदी that is the smallest bacteria that is dialister pneumoscientes सेमती गोटे क्वेश्चन ताको क्वेश्चन नंबर 9 देखो सेटा को मु लेखि जेथरे largest bacteria सेमती जदि पचरा हबो dash is known as the largest bacteria it is Thiomargarita ramidiensis so largest bacteria is Thiomargarita ramidiensis so it is the largest bacteria next question number 5 gala 6 gala 7 eukaryotic cell have true dash eukaryotic cell have true nucleus that means nucleus having nuclear membrane and nucleolus u means true karyotic means related to nucleus or carrion माने nucleus so true nucleus त माने eukaryotic cell ले रहछि true nucleus so these are some objective questions गोटे शॉर्ट नोट ऑलरेडी मु कहि सालेनी टोटिपोटेंसी कथा किछि डिफरेंस मध्ये तमरो परीक्षा रे पडिबो सो वर्तमान जे हम जते सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन कले सेगुडा को भलो करी देखिबो ता सहित किछि शॉर्ट नोट
आ किसी डिफरेंस मु कहि दउची सेगुडा मध्य एग्जाम पे भल कि देखिबो ऑलरेडी गोटे शॉर्ट नोट मु कहि सालिनी टोटिपोटेंसी आ एटा कहबा दरकार नै याकू लिखि दबो सेकंड सेल थ्योरी विषय रे शॉर्ट नोट टिके आमे खाली डिस्कशन कर देबा सेल थ्योरी जदी पढे शॉर्ट नोट राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल थ्योरी ताल प्रथम लिखिबो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट एमजेस लिडेन एंड टीस्वान ये गला तापर स्टेटमेंट रहबो सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ ऑलरेडी आमे आगरु पढिचे सो एटा रहबो फर्स्ट स्टेटमेंट रे सेकंड स्टेटमेंट रहबो एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल बाय साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्को दैट इज ओमनी सेलुला ऑलरेडी आमे डिस्कशन करचे तापरे सेल्स कैन डिवाइड एंड रीडिवाइड टू प्रोड्यूस इट्स न्यू सेल प्रोड्यूस करे सेल उडा डिवाइड और रीडिवाइड है कि एवं सेल को जदी डिफाइन करबा सेल हैज ए मोर और लेस सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस and the cell is delimited by the protoplasm cell the fluid content in the cell is protoplasm which is limited by a membrane that is known as plasma membrane and in case of animal cell the outer covering is the plasma lemma whereas in case of plant cell the outer covering is the cell wall so एति पॉइंट आमे लेखिया पड़िबो सेल थ्योरी ऑलरेडी मु एटा डिस्कशन करछि ताकु टे भलो कि देखिबो निजे लेखिया चेष्टा करिवो बही भी रेफर करि परिबो ये हला शॉर्ट नोट तापरे आमे डिफरेंस किछि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल ऑलरेडी एटा हमर डिस्कशन सरी जाइछि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल ऊपर आमे डिस्कशन करछे आमे खाली जस्ट आउथरे मु मने पके दोछि प्रो मीन्स प्रिमिटिव कैरियोटिक मीन्स रिलेटेड टू न्यूक्लियस सो प्रोकैरियोटिक सेल they have less advanced nucleus that means nucleus is less developed means nucleus without having nuclear membrane and nucleolus whereas eukaryotic cell have well advanced nucleus that means u means true karyon means nucleus so already ये सब जिनसा में discussion करचे nuclear membrane nucleolus is present membrane bound organelles like mitochondria plastid lysosome Golgi bodies endoplasmic reticulum these all are absent whereas membrane bound organelles are present in case of eukaryotic cells. Again here ribosome is of 70S type, here ribosome is of 80S type, here DNA lacks histone protein, here DNA is with histone protein. ये सब जिनस ऑलरेडी आमे डिस्कशन करछे से वीडियोटा को आउथरिटी भलो कर देखिबो पॉइंट उडा को निजे लिखिबो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल सेमिति आउ गोटे डिफरेंस हे परिबो डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑलरेडी एटा हमें डिस्कशन कर सारिचे गुडाए पॉइंट कहिछि 10-12टा पॉइंट कहिछि एटा लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये तमरो हे परिबो डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स सब पॉइंट उडा को तमे लिखिबो खाली मु आउथरे टिके मन पके दोछि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स मींस दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हेreas एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स दैट मींस दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल आ गुड पॉइंट हे परिबो आधरे प्लास्टिड अछि बा क्लोरोफिल पिगमेंट अछि ग्रीन पिगमेंट अछि ड्यू टू व्हिच फोटोसिंथेसिस होउछि एठी ग्रीन पिगमेंट्स नाही फोटोसिंथेसिस होउनी नेक्स्ट पॉइंट रे हमें कहि परिबा जदी प्लांट सेल उडा को हमें देखिबा प्लांट सेल्स आर टोटिपोटेंट व्हेreas एनिमल सेल्स आर नॉट टोटिपोटेंट अगेन प्लांट एनिमल भितरे मूवमेंट रे डिफरेंस अछि तम कहितली प्लांट पार्ट्स कैन मूव व्हेreas एनिमल्स एज ए होल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस प्लांट मूवमेंट इज ऑफ टू टाइप्स वन इज फोटोट्रोपिक मूवमेंट अनदर वन इज जियोट्रोपिक मूवमेंट ऑलरेडी कहिछि लाइट अडकू जाए कांड सेटा को कहंती फोटोट्रोपिक मूवमेंट the shoot moves towards the direction of light that is known as phototropism and the movement is known as phototropic movement whereas root moves towards the direction of gravity that is known as geotropic movement or geotropism so एवडा हमें ऑलरेडी पढिचे मूवमेंट कथा growth is unlimited in case of plants whereas growth is limited to certain period of life in case of animal रो growth टा certain period पे limited again plant animal भितरे हमें बहुत डिफरेंस पढिचे जे यार कार्बन डाइऑक्साइड यूज करे ऑक्सीजन टा बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन हला बाय प्रोडक्ट किंतु एठी कार्बन डाइऑक्साइड ये बाय प्रोडक्ट किंतु ऑक्सीजन टा को यूज करे एनिमल सो एमती सब बहुत गुडे डिफरेंस ता भितरे कहै छी प्लांट सेल एनिमल सेल भितरे मध्ये डिफरेंस उडा सब देखिबो यार आउटर कवरिंग सेल वॉल तार आउटर कवरिंग हो सेल मेम्ब्रेन आधर लार्ज साइज वैक्यूल होची सेथरे जदी वैक्यूल रहबो स्मॉल साइज एंड मेनी नंबर रहबो आधरे तमर सेंट्रोजोम नाही बा सेंट्रियोल नाही सेथरे सेंट्रोजोम सेंट्रियोल रहबो तापरे तार जो
डिफरेन्सिएसन जिते हुए प्लांट डिविजन सेल डिविजन जोटा हुए यार सेल डिविजन केमती टाइप रो ऑलरेडी ताको आमे डिस्कशन करछे से वीडियो गुडा को देखिबो सो डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ये गोटे कंप्लीटली ये गोटे लॉन्ग क्वेश्चन भी हे परिबो जदी तमरो डिफरेंस रे पड़े 3 मार्किया क्वेश्चन ने 3.5 मार्किया क्वेश्चन ने ताले तमे ताकू मोस्ट सालिएंट इंपोर्टेंट 5-6टा पॉइंट दे परिबो सो वर्तमान तमरो एग्जाम पे ए रहला प्रिपरेशन एतिके एटलीस्ट देखिबो नेक्स्ट क्लास रे आमे जदि पढिबा आउ किछि ऑर्गेनेल विषय रे डिस्कशन करबा एवं कंप्लीटली सेल रो स्ट्रक्चर को आमे डिस्कशन करबा थैंक यू आउ ए जो कोरोना पीरियड रे घरे रुह पिला बने सेफ रुह पाठ पढ़ आउ मोबाइल रो डिसयूज करनी मिसयूज करनी मोबाइल की तमे केवल पाठ पढ़िया पे यूज करो ता भितरे गूगल सर्च करी किछि जदि टर्म्स तुम बुझी परनो ता भी ताकू भी पढ़ आउ सार मैंने जहाँ पढ़ाऊँ ताकू भल करी पढ़ थैंक यू।